India's high-speed dream is coming to life with the Mumbai-Ahmedabad bullet train thanks to the visionary efforts of Prime Minister Narendra Modi and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel. At the heart of this transformation is Ahmedabad Sabarmati Station, home to the country's first multimodal transport hub, seamlessly connecting bus, metro, rail and the future bullet train. The hub boasts world-class amenities including a 1,300 vehicle parking space, food courts and retail shops. Modeled on Japan's E5 Shinkansen, the bullet train will run at 320 km per hour, accommodating 731 passengers and reducing the 508-kilometer journey to just over 2 hours. With sustainability at its core, the hub features a 700 kWp solar plant, rainwater harvesting and energy-efficient systems. पश्चिम भारत में अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। आने वाले कुछ समय में ये काम पूरा होकर के बुलेट ट्रेन दौड़ना शुरू करेगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। In Vadodara, civil work for the bullet train construction under Make in India is nearing completion. The Grand Station near Pandya Bridge will be ready by December 2025. With a 352-kilometer stretch of rail laid out in Gujarat and over 212 kilometers of girders already in place, Vadodara's 3-story station is a key link in this high-speed journey. The project is accelerating towards completion with precise planning and engineering expertise. हमारे 8 स्टेशन हैं, 8 स्टेशनों में काम बहुत तेजी से चल रहा है। सूरत बिलीमोरा जो प्रायोरिटी सेक्शन के स्टेशन है, वहाँ का भी लगभग काम खत्म की तरफ है। उसके अलावा हमारे 20 रिवर ब्रिजेस हैं, जिसमें से 11 हो चुकी हैं। तो हम लोग जो अपना लक्ष्य है उसको निर्धारित के हिसाब से वैसे ही कार्य चलेंगे। The journey continues from Vadodara to Surat, where innovation is in full swing. The 450-meter rail and concourse slabs of the station are complete thanks to the cutting-edge Japanese machinery like the flash butt welding machine. Over 175,000 noise barriers, each weighing 830 to 840 kilograms, have been installed on the bullet train viaduct in Gujarat to minimize sound from the train's aerodynamic design. With 35,000 metric tons of rail ready, Surat is set to embrace a silent, high-speed future. इस ट्रेन की विशेषता ये है कि अगर आप इसकी नोज देखेंगे, जो इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि जब आप किसी भी टनल से निकलते हैं तो एक जो ब्लास्टिंग साउंड आता है वो नहीं आएगा, तो हमारे पैसेंजर्स को बहुत एक कंफर्टेबल राइड मिलने वाली है। The bullet train project is more than a transport upgrade. It's a symbol of India's technological future. As it speeds towards completion, it promises to redefine urban connectivity and set the benchmark for modern infrastructure.